परसों है, नो कल है। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी। कल है रिपब्लिक, नो परसों है। 26 को है, टुडे 24th। ओ माय गॉड, परसों है रिपब्लिक डे। सो आज हम लुक कर रहे हैं रिपब्लिक डे रिलेटेड। हम आई मेकअप मोस्टली करेंगे एंड दिस इज अ वेरी वेरेबल लुक। सो आप अगर किसी ऑफिस पार्टी में जा रहे हो रिपब्लिक डे रिलेटेड, या आप किसी एक्चुअल फंक्शन में जा रहे हो अटेंड करने, यू कैन डू दिस लुक, यू कैन एक्चुअली डू दिस लुक। इट्स नथिंग too gaudy. It's something wearable. So definitely we're gonna try to keep it simple and something pretty as well. So let's start. First off हम करेंगे हमारा eye makeup. So let's start with that. Eye makeup as I usually do. It's going to be the same steps. कुछ difference नहीं है इसमें. The same thing which I do, and I'm going to be using my Swiss Beauty brow palette. Brushing my hair and then taking this dark brown color. आपको एक बार आईब्रो बनानी आ जाएगी ना अपनी, यू वोंट इवन टेक लाइक 1 minute टू डू द आईब्रो। इट्स दैट इजी एंड दैट क्विक। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे फिल करना है, कहाँ पे नहीं करना है। एवरीथिंग इज प्रिटी इजी देन। Keep brushing in between the strokes, that will help to blend the product. ओके, आज मेरा आईब्रोज फिर भी कंपैरेटिवली बहुत सिंपल लग रही है बिकॉज द मेन फोकस शुड बी ऑन द आईज। तो जैसे मैंने बोला कि वंस यू हैव लर्नड द वे ऑफ डूइंग योर आईब्रोज, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेंगे टू फिल इन योर आईब्रोज। इट विल बी दैट इजी फॉर यू बिकॉज हाथ बैठ जाएगा आपका। ऑल्सो प्रोडक्ट पिक करने की बात आई तो ऑलवेज टेक लेस प्रोडक्ट एंड देन कीप फिलिंग इट। अगर आपने एक ही बार में ज्यादा ले लिया एंड देन फिर आपसे वो ब्लेंड नहीं हो पा रहा, दैट्स एन इशू। सो आप धीरे 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 फिल इन करिए। दैट्स अ बेटर ऑप्शन ऑलवेज देन ज्यादा फिल करने से। देन वो आपको बचाता भी है फ्रॉम द ब्लैक thick eyebrows. Okay, now that our eyebrows are done, let's conceal our eyelids. We'll be concealing it with Lakme concealer in the shade Nude 20. Try to avoid using black because our black जैसे use करोगे, sorry, avoid using white because if you use white, your eyelids will show more grayness. So use something which is your shade but 1 to 2 shades lighter. If you're someone who hates fragrances, avoid this concealer. This concealer has this entire collection, I would say. This entire collection has a really strong fragrance in it. So it's the Lakme 925 Primer Plus Matte and Lakme 925 Primer Plus Matte Concealer. So this entire range has बहुत ही ज़्यादा fragrance in their products. So if you are someone who hates fragrances, you are super allergic to fragrances, avoid this range. Okay, now we'll quickly set my eyes. I'm so sorry today. My entire
products are here and there because over the weekend I had a client, so मैंने makeup किया था एक photo shoot के लिए, so hence everything is here and there. So setting the base. Okay, once you have nicely set, you can see that my eyes are very much now set matte. I can go ahead with my eye look, whichever I'm creating. I'm going to take a smaller brush today, only and only because I don't want the colors to be merging with each other. मैं चाहती हूँ कि specific colors specific जगह पे रहे. So in that case, it will not go here and there. I'm using the Nykaa Stunner palette, Eyes on Me Stunner palette in the shade Sundown Stunner. It's this palette. And I'm using this orange color. Usually मेरे palette में oranges बहुत है, but I like this orange color on my eyes. So I'm using this. It's brown, but it's orange as well. We can enhance that. Okay. We'll start by applying it on the crease area. So first pack the color nicely on the crease area. If you can see, मैं पहले blend नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ color pack कर रही हूँ पहले. इसे कहते हैं packing. As I said that this entire look is going to be very variable. So don't expect any too much pigmentation. अगर आपको pigmentation चाहिए, you can always apply something which is more pigmented, eyeshadows which are more pigmented, and you can always use cream base underneath the eyeshadow to make it more pigmented. But I am trying to keep it natural and variable, hence using only eyeshadows. So now I'm blending it. And now you can see the actual intensity of this color. Okay. मैंने उससे जैसे हमने फुल कट क्रीज किया था उस शेप में मैंने बहुत ही अच्छे से इसे अप्लाई कर दिया है. Same thing we'll be doing on the other side of the eye. पहले अच्छे से पैक करेंगे. Okay, and now we'll start blending. Okay. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये इतने कम पिगमेंटेशंस के साथ आई एम वर्किंग ओनली एंड ओनली बिकॉज I want this look to be super variable. Because when I used to work earlier, मैंने ये actually ये look I have worn it to my office, and no one was saying that it's too much. वैसे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए आपको, but I'm just saying कि किसी को ऐसे ज्यादा नहीं लगा. Everyone thought that it's super creative. Okay. Now I'm going to take this palette and I'm going to use a darker shade like a yellow orange mix. Changing my brush to something very smaller. Okay. And then taking an orange shade. Making an orange shade. अब उसको मैं डीप एनहांस कर रही हूँ उस ऑरेंज को, बिकॉज हम वहां पे कट करेंगे. सो वी वांट
अगर आपके पास ऑरेंज शेड नहीं है, मिक्स रेड एंड येलो टुगेदर. Okay, now that it's deep, I will go back to the previous brush which I used for blending and application, and उससे मैं इसको थोड़ा सा blend कर लूँ. I'm so sorry. Hang हो गया. Now that the orange is done, let's cut it with a white concealer. So अभी हम अगर हम yellow concealer से cut करेंगे, then the white flag का बीच वाला part जो piece के लिए stand करता है, piece, um, we won't get it. So I'm going to be using a palette. Okay, and we will be using this white color which we have to cut the crease. So I'm going to take a flat brush. I'm going to take a nice flat brush or an angled brush, whichever seems fine to you. Flat brush, clean flat brush. Now taking the white color. Okay, मैं इस palette से बहुत सारी चीजें mix करती हूँ, so there is a lot of color in the white. Hence, I'm avoiding this. आप use करोगे तो please clean कर लेना. I'm using my another palette today, जिसके पास blue भी है and white भी है. So I'm using this white today. If you don't have white concealer, if you don't have a white paint, if you don't have anything like that sort of, you can always use white eyeshadow. That's completely fine. Just cut करो बहुत अच्छे से. Okay, we are going to be cutting this nicely, and इसको पूरा हम करेंगे paint. Cover the entire thing. Okay. Now you blend this here, and then when you apply foundation, you always work with that. दूसरे साइड पर भी हम कट कर लेंगे. आई एम सॉरी, मैं जो वाइट है वो वाइट कट करते हुए कुछ बोल नहीं सकती, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी यू नीड टू हैव अ स्ट्रेट फेस.
Okay, the white is done here as well. Clean the under eye. As it is a cream product, ये बहुत ही easily clean हो जाएगा. Even clean something which is on the sides. Okay. Uh, Even this white has got bad now because it has orange. But make sure you clean the palette and then you keep it. Otherwise, it will start taking over. ठीक है. अब इसके ऊपर हम यूज करेंगे some setting powder. ठीक है. So try to use a setting powder which is either translucent or either if you have white eyeshadow, better. ठीक है. सबसे बेस्ट वाइट आई शेडो अगर है आपके पास तो आप वाइट आई शेडो से सेट कर सकते हो. इफ यू डोंट हैव वाइट आई शेडो then you can always go ahead with a translucent powder. We can use this one. I'm going to use some translucent powder so you can see right here. Going to take a powder brush. Going to take the powder and going to set this completely. ये सेट नहीं करोगे सब जगह पे फैलना चालू हो जाएगा which you absolutely don't want. और आपने ऑरेंज इतना अच्छे से इंटेंसिफाई किया है कि इवन इसके ऊपर अगर पाउडर गई भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो यू टेक योर टाइम एंड सेट इट. A translucent powder or a soft light powder can always set white color. अगर आपने banana powder ली अगर आपने दूसरी कोई powder ली it's not going to set because then everything will be yellow. Going back with my orange brush and will be intense just brushing off the powder जो हमने लगाई है. White के ऊपर नहीं, only on the orange. Yes. Now we'll be going on the lower lash line. So for the lower lash line, you need a flat brush again, not flat brush, chota brush, something which is going to focus on the green part below. If you have a green kajal, apply some green kajal. If you don't have a green kajal, it's completely fine. You can use something which is called as. I'm going to be using this color, okay, with the back of my actually with the same brush, and we'll be applying it under the eye. Just applying the pigment for now. Okay, just applying the pigment for now. We will always be setting the under eye. मैंने जैसे बोला अगर आपके पास काजल है तो आप काजल भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, our pigment is set nicely. ग्रीन कलर, ग्रीन के भी अलग अलग कलर्स होते हैं गाइस. तो जैसे अगर आप यही पैलेट देखोगे, अगर आप यही पैलेट देखोगे तो इसी पैलेट में आपको तीन ग्रीन मिलेंगे. ये एक सी ग्रीन, ये ग्रीन एंड देन ये ग्रीन. दिस इज द कलर विच वी आर लुकिंग फॉर. एंड अब इसके ऊपर मैं ग्रीन कलर का आई शेडो लूंगी एंड आई विल सेट इट. Now you see the difference. You always have to set it with the eyeshadow. Don't forget this part.
ओके, दोनों साइड हमारे ग्रीन लग गए हैं अभी। बहुत ज्यादा दिख रहा आपको होगा सब कुछ, बट वेट, we will be cleaning everything which is on the sides. Now we will be doing some blue eyeliner. So again, we are just going to switch to the pencil brush. हम इसी okay, now for now we can use this palette and we are going to use this blue color and we are going to make a liner. आप लाइनर भी यूज कर सकते हो, ब्लू लाइनर विच कम्स इन द मार्केट, लैक्मे की है. Don't do the liner winged part, otherwise it's going to जो हमारी यहाँ पे फ्लैग बन रही है उसकी ये हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी जो लेयरिंग हम कर रहे हैं. सो ऑल ओनली कीप इट टिल ऑलवेज. ओके, सो यू कैन सी एवरीथिंग इज देयर. बहुत ही वेरेबल लुक है. अब ये सारी चीजें लाइनर, आई शेडो, इनसे भी कर सकते हैं. नॉट नेसेसरीली यू हैव टू यूज क्रीम प्रोडक्ट्स. इट्स जस्ट फॉर द क्रिएटिव लुक एंड द लॉन्जिटिविटी. मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, द एजेस ऑफ माई लुक. क्लीन करने से बहुत ही क्लियर लुक आता है. सो विल बी डूइंग दैट using micellar water. Okay, and we'll be cleaning off the edges. Now you see the difference. इस तरफ भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे. Okay. Now you can always add lashes to this. That's completely your choice. अगर आपको lashes करनी है नहीं करनी है, that's your choice. I mean, we can try. We can try mascara. So because lashes से भी क्या होगा कि आपने जो look किया है वो पूरा चला जाएगा. So I'm just going to apply some mascara to show you guys the look.
If you guys have blue mascara, more than enough. आप वो लाइनर के जगह पे आप उसको लगा सकते हो, या फिर वो लाइनर लगा के भी आप ब्लू मस्कारा लगा सकते हो. एंड अगर लेंसेज है तो आप ब्लू लेंसेज भी लगा सकते हो. बट यू सी द डिफरेंस आफ्टर द मस्कारा एंड बिफोर द मस्कारा. मस्कारा ऑलवेज विल टाइट लाइन योर आईज and will make them look deep. Now you see it's a very clean look. सेम हम करेंगे लोअर लैश लाइन पे. Okay. And if you see with my, I mean the white, obviously you will be wearing white as well. Try to keep your lips very normal. Don't apply any color. लिपस्टिक आपको थोड़ी सी लगानी है तो आप न्यूड लगा सकते हो और ग्लॉस लगा सकते हो, लिप बाम लगा सकते हो. बट ट्राई टू अवॉइड एनीथिंग ऑन योर फेस एंड आई ट्राई टू अवॉइड एनीथिंग ऑन योर लिप्स. बिकॉज पूरा अटेंशन अगर आंखों पे जाएगा एंड देन फिर वो भी ब्राइट, ये भी ब्राइट, एवरीथिंग विल बी ब्राइट, इट विल लुक वेरी वेरी ओवरडन मेकअप. तो अगर आपको आईज पे अगर आपको हल्का सा इफेक्ट चाहिए, देन ऑलवेज जस्ट कीप द मेकअप टिल द आई. एंड बाकी सारी चीजें बहुत ही सिंपल रखना. नहीं भी करोगे कुछ फिर भी चल जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ हाइलाइटिंग. सो आई एम गोइंग टू टेक and will be highlighting the inner corner. Okay, that's it for the eye look. मैं अगर सिखाते सिखाते इस लुक को आई कैन डू इट इन हाफ एन आवर, देन मियरली इट्स जस्ट फॉर 15-20 मिनट्स का आई मेकअप है ये. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये 15 मिनट्स में आ जाएगा. जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग ऑन समवन. इफ यू वांट टू डू इट ऑन अ किड, you can do it on a kid for their school functions, but try to use all organic products like makeup products. अच्छे brands के use करना. Don't use local brands on kids, like please don't. And अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना इन जनरल, अच्छे क्वालिटी. इफ यू आर डूइंग इट फॉर किड्स, इफ यू डूइंग फॉर योर ऑफिस थिंग, यू कैन नॉट यूज द, इफ यू डोंट वांट टू यूज द क्रीम प्रोडक्ट्स, यू कैन ऑलवेज जस्ट यूज आई शेडोज. वो बहुत ही कम इंटेंसिटी के होते हैं बट बहुत लुक देगा आपको, बट इंटेंसिटी इतनी नहीं रहेगी. सो इफ यू वांट टू जस्ट डू दैट, दैट्स इट. इट्स अ वेरिएबल लुक. अगर आपको क्रिएटिव करना है तो यू कैन ऑलवेज मेक द अशोका चक्र इन बिटवीन एज वेल, बट वी वांटेड टू डू इट समथिंग व्हिच यू कैन वेयर आउटसाइड. एंड दैट्स हाउ दिस लुक हैज कम टुगेदर फॉर यू गाइस. जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास व्हाइट कंसीलर नहीं है, आप नॉर्मल कंसीलर यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जस्ट सेट इट विद एन व्हाइट आई शैडो इफ यू हैव. दैट्स इट फॉर दिस लुक. When you open the eye, you can all see all the colors aligned. That is what the main motive is, and that's it for the look. Happy Republic Day in advance to you guys. अच्छे से celebrate करना. 75th year है इस बार. And try to be all creative, not only for social media but generally. So that's it. And also, Jai Shri Ram. Ram ji aa gaye hai. So congratulations to everyone who's been waiting for that as well. That's it. That's it for today's live session. I'll be meeting you on Saturday, and stay tuned for the next live session. Bye bye.